व्हाट्सअप, क्या हाल है? सो आज हम करते हैं लीड कोड कॉन्टेस्ट एपिसोड. लेट्स सॉल्व द कॉन्टेस्ट 5 or 9. राइट, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम. दैट्स इजी, so it should not take us much time. So what's given? You are given integer array nums. The digit range of an integer defines difference between its largest digit and smallest digit. तो बोल दो 9 3 4 5 एक नंबर है तो उसकी डिजिट रेंज क्या होगी? 9 - 3. राइट, मैक्स और मिनिमम इन दोनों का डिफरेंस. तो सम ऑफ ऑल इंटीजर नम्स. ओके, सो लेट्स से अगर सबका मैक्स जो है वो कुछ एक्स नंबर आया, राइट, तो हमें बताना सम ऑफ ऑल डिजिट्स, राइट, डी ऑफ आई सच दैट सम ऑफ, राइट, जितने भी एरे के अंदर नंबर्स हैं, राइट, पी ऑफ आई सच दैट दे आर दिस रेंज, राइट, रेंज इक्वल्स टू मैक्सिमम के बराबर है, बस ये बताना है. तो बस फोर लूप चलाओ, डू अ राइट फोर लूप ओवर एरे. व्हाट आर वी गोइंग टू राइट? से टेम्परेरी इक्वल्स टू एरे ऑफ आई, राइट. जब तक हमारा क्या होगा, टेम्परेरी ग्रेटर देन जीरो नहीं होगा तब तक हम क्या करेंगे, राइट, मैक्स और मिनिमम स्टोर करते जाएंगे, राइट. वी टेक एक्स इक्वल्स टू क्या, राइट, temp modulus 10, and we store our max, we store our minimum, and then we do temp minus equals to 10. So right, this is one pass. उसके बाद what are we going to do? Second pass. Second pass में, right, we do again 4, right, array of I equals to 0 से लेके n तक, right. अगर अपना ये क्या, राइट, जो भी बोलते हैं मैक्स, राइट, मैक्स रेंज इक्वल्स टू मैक्स माइनस मिनिमम के बराबर है. नॉट मैक्स माइनस मिनिमम, जो रेंज जो है करंट की, वो मैक्स रेंज के बराबर. यहाँ हम कैलकुलेट कर लेंगे, राइट, मैक्स रेंज इक्वल्स टू व्हाट, मैक्सिमम ऑफ व्हाट, रेंज कोमा मैक्स माइनस मिनिमम. और जो भी मैक्स रेंज अगर रेंज है तो सम प्लस इक्वल्स टू जो भी अपना एरे ऑफ आई है वही है, फिर हम रिटर्न कर देंगे. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑफ एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करा है. थिंक्स. चलो देखते हैं, लेट्स सी द इम्प्लीमेंटेशन नाउ. Okay, let's start with the first question. It's pretty much simple. We already decided, right, that we need to find the max and minimum, then we find the max range, then we again loop over the same area and we find the sum. So let's say anti answer equals to 0, anti max equals to what? Right, max equals to what? 10, because it cannot be more than 10 difference. Then we iterate over, right, for anti x and what nums. What we have to do? We have to find the each, right? I'd say like temporary x. While temporary greater than 0, we have to identify the min max, right? And let's say current maximum, what can be maximum will be, right, 10, and what will be minimum will be 10, right. So what's the digit, right, anti x equals to what, temporary modulus 10. We do current max equals to max dot max, right, current max comma what, x current minimum equals to max dot minimum current minimum comma x, right. Then we hit the temporary. This is right at the end what we have to update the max range, right, and math dot max what max what do we have, right, current maximum minus current minimum. Now we do again the same pass, we check the same thing. Then what do we check, we check if, right, max equals to what, current max minus current minimum, right. If this is true, answer plus equals to what, I add it to the answer, then I return answer. Let's run this one. What do we have? Oh, okay, let's say digit, right, let's say digit. Because we cannot do it again, right, X. Why do we have wrong here? Answer is 0. Maximum is 10. Maximum is 0, right? We cannot initialize it to 10 because it will be 0. If we already initialize to the max value, that's obviously going to be the maximum. Yeah, done.